Hello everyone, good morning. Welcome to Literature Vidya, and today we are here with a complete revision series on paper 1, and we are beginning up with teaching aptitude. So, we will be dealing with teaching aptitude to the point, dealing with all the important points for the examination. So, you should not miss out a single word said in the video. So let's move forward. Okay, let's first talk about the basics of teaching, right? So there are two words, teaching and teacher, right? Which are correlated. So now what is the aim of teaching, right? So जब हम बोलते हैं टीचिंग तो टीचिंग का पर्पस होता है किसी भी इंडिविजुअल को कोई नॉलेज देना या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना या कोई एजुकेशन प्रोवाइड करना, राइट? नॉलेज मतलब जैसे टीचर आपकी जो होती है वो आपको नॉलेज देती है, राइट, बाय गिविंग यू लेक्चर्स. जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर वो आपको अवेयर करते हैं, राइट, या फिर मे बी वो आपको मॉरल लेसन सिखाते हैं, राइट. और बहुत सारे आप फिजिकल एनवायरनमेंट के थ्रू भी नॉलेज गेन करते हो, राइट. सो किसी भी फॉर्म ऑफ टीचिंग जो होती है वो या तो आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है या आपको इंफॉर्मेशन देती है, राइट, एंड एजुकेशन. ओके, उसके बाद में किस जो सेकेंड पॉइंट हमारा आता है वो ये है कि इन द टीचिंग एंड द टीचर सिनेरियो जो वर्क करता है, समथिंग दैट स्टैंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट. एक क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब द क्लासरूम शुड बी अ इंटरैक्टिव क्लासरूम, राइट. Because what sort of environment you create in the classroom impacts the learning, impacts the teaching. Environment is a very very important component of teaching. इफेक्टिव लर्निंग के लिए इफेक्टिव टीचिंग बहुत जरूरी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. इट शुड नॉट बी दैट जस्ट the teacher is giving you the lecture and the students are just hearing it, or maybe they are just sitting. It should be a two-way process. बच्चों को भी बोलने का उतना ही हक दिया जाना चाहिए. They should be allowed to raise their doubts. Yes, and over that the teaching should be systematic. जो टीचर है ऐसे नहीं कुछ भी उठा के पढ़ाने लग जाए. शी नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड देन ग्रेजुअली बिल्ड अप ऑन दैट बेसिक ब्लॉक्स एंड देन gradually create a building out of it, so that it is a effective learning, so that each and every student is able to link up and understand the concept. Yeah, तो याद रखो टीचिंग में टीचिंग का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है. किस तरीके का, जैसे कोई भी टीचर होती है, शी नीड्स टू मेंटेन दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट वेयर शी अलाउज हर स्टूडेंट्स टू स्पीक, but over that it is very very important for her to also maintain discipline in the classroom, also maintain that distance between the teacher and the student. Okay, then teacher acts as a guide and gives assistance, right. जब हम gradually बड़े हो जाते हैं, initially teacher जो होती है वो एक active player होती है, right. वो तुम्हें knowledge देती है, information देती है, तुम्हारा fact base develop करती है, तुम्हारी understandings develop करती है. But as you move forward in your education, in your learning, right, gradually the teacher is just a catalyst, right. वो सिर्फ तुम्हें aid provide करती है, सिर्फ तुम्हें guide provide करती है in teaching. So the teacher acts as a guide and gives you assistance. Okay, then number 4 we talk about it is the teacher who aims to bring about the change in the behavior of the student. When that change is brought about, it is called learning. Teacher is both your teacher and mentor, right. So teacher का aim क्या होता है? Teacher का aim होता है
to bring about change in the behavior. And when we say change in the behavior, it is called learning. Learning का major purpose ही होता है किसी इंसान के behavior में एक permanent change लेकर आना. That is what is called learning, and that is the basic aim of a teacher, कि किसी भी individual के behavior या attitude को mold down करना. At that point of time, teacher is not just giving you information, but is also your mentor who is trying to teach you the way to live life. Yeah. But you have to remember that when we talk about the idea of teaching, teaching is not something that is confined to the classrooms. It is something that takes place within the classroom, outside the classroom, and it can take place anywhere. Teaching necessarily does not need a teacher. And hence, we say that teaching is of various types, like formal teaching. जब हम बोलते हैं formal teaching, the word itself tells you that we are talking about teaching that takes place in a formal institution, where you have a proper curriculum, where you have a teacher to teach, where you have exams, where you have certifications given after you give up your exams. This form of learning is said to be formal teaching, right? Then the second is informal teaching. Informal teaching is a form of teaching that takes place at your house. That is why we say that the mother is the first teacher. The manners, the morals that you are being taught in your house, all of these are the part of informal teaching. And another is also called as a non-formal teaching. एक होती है non-formal teaching. Non-formal teaching क्या होती है? वो basically एक ऐसी form of teaching होती है जो ना ही तो formal होती है ना ही informal होती है. It stands somewhere between. Like online teaching is a non-formal form of teaching, या फिर co-curricular activities से जो तुम चीजें सीखते हो, that is a non-formal form of teaching. That majorly helps you to gain the skills required. Right? And then non-formal, okay, you have to remember that non-formal teaching को हम autonomous learning भी बोलते हैं. And this is said to be the first building block of learning and teaching process. सबसे पहले non-formal teaching ही enters the life of a individual or a child. Then he goes on to formal teaching. Okay. Then it says that the aim of a teacher is not to just give you lecture, but rather holistic development of a child. She has to ensure that the child develops completely as a whole individual. Her aim is not just to provide you or feed you down with facts and information. Her aim is also to mold your behavior, also to motivate you. Okay. Then it says that the teacher imparts knowledge from a less experienced pupil to a more experienced one, right? Less experienced pupil is the student and the teacher is a more experienced one. So it is a more experienced one, the teacher, who gives down or imparts knowledge to the less experienced pupil, that is the students. So the less experienced pupil are said to be the dependent variable. Why? Because they are dependent on the teacher, that is the more experienced, right? And that is why the teacher is said to be the independent variable. So variable teaching में तीन तरह के variable होते हैं. The dependent variable, that is the student, the independent variable, that is the teacher, and the intermediary variable, that is the syllabus or the curriculum or the environment or whatever is a aid required in the process of the teacher teaching and the student learning. That is called the intermediate variable, right? I hope we are clear with the basic concept of teacher and teaching. So let's move forward now. Let's look at the characteristics of teaching. Okay, so there are two terms, one teaching, other training. When we say teaching, teaching का मतलब होता है पढ़ाना, to give information, right? And it is a holistic term
बट वेन वी टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जो होती है वो अगर हम उसको लेमैन टर्म्स में भी देखें तो ट्रेनिंग का मतलब होता है कम ऑन द ग्राउंड्स एंड ट्रेन योरसेल्फ. दैट मीन्स इट इज अबाउट focusing on a particular skill and even act at its practical application. So training is about a particular skill और हम उसका practical application भी जाते हैं. It is going deep into one thing is training. Teaching is a holistic term. You learn a lot of things in the process of teaching. Then the teacher motivates and guides you to learn. Though the form of motivation changes, initially it's extrinsic motivation. It is in the extrinsic motivation that the teacher plays the major role. जब एक बच्चा होता है at that point of time the teacher has a major role in motivating the child. The extrinsic form of motivation, it is at that point of time that the teacher has a major role to provide motivation and guidance for the student to learn. Then the teacher, in order to teach good, needs to have very strong command on the subject. Because if she has a very strong command on the subject, it is only then that she can find ways and means to make the students understand the subject. It is only then that she can use different forms, teaching methods like technology, maybe flow charts, maybe diagrams, to make the students understand the concepts, right? In any process of teaching, it is not important as to it is important as to what you are teaching, but more than that it is also very important as to how you are teaching. So the para language of a teacher is very important, not just what but also how. The expressions of a teacher stand very important into teaching. The teacher needs to understand the individual difference. She needs to understand that a class of 30 students does not mean that all the 30 students are the same. She needs to understand that each student is different and each student's demand is different. Each student's level of learning is different. The frequency of learning is different. And hence, she needs to understand the individual difference that is present in her classroom. Individual difference is a very important characteristic of teaching. Then we say that teaching is a science. Why do we call teaching is a science? We call teaching is a science because it deals with facts, rules, data, right? It is a systematic and a structured system. जब हम टीचिंग करते हैं कितने सारे फैक्ट्स, रूल्स, डेटा, ओवर दैट हम लोग एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कोई भी टीचिंग करते हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल टीचिंग इज अ साइंस, राइट? Then we say it is not just a science, it is also art. Why? Because ये तो एक आर्ट ही है ना. How do you deliver that teaching? So teaching is not just a science, it is also a art. And over that, it is a continuous process. Even when the teacher is coming to teach, जब टीचर पढ़ाने भी आ रही है, at that point of time, she is also learning. So teaching or learning एक continuous process है. It never ends. I hope we are clear with the characteristics of teaching. These are very important characteristics. So keep them in mind. Then when we talk about teaching styles or the level of teaching, so the concept of level of teaching was given by Morris L. Bigger. Remember, level of teaching का concept Morris L. Bigger ने दिया था. उसने टीचिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला, अथॉरिटेटिव टीचिंग. इसमें जो अथॉरिटेटिव टीचिंग होती है, इसमें टीचर सेंट्रल प्लेयर होती है. इसमें टीचर डिसाइड करती है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है. और ये मेजरली कहाँ होता है? ये होता है टॉडलर्स के साथ या फिर क्लास 1, 2, 3 के स्टूडेंट्स के साथ, जहां पे टीचर का एम होता है बेस डेवलपमेंट करना, राइट? उन लोगों की फाउंडेशंस को ले करना. इसमें टीचर मेजरली जो होती है वो बच्चे का फैक्ट हाउस क्रिएट करती है. एंड दैट इज व्हाई द फोकस हियर इज ऑन रोट लर्निंग.
In authoritative form of teaching, we focus on the memory. So it is also called the memory level of teaching. It is here that the students require extrinsic motivation. The teacher says that the student who learns first will get a chocolate. So this is a extrinsic motivation that the teacher is giving to the students. The reward is the extrinsic motivation that the teacher is giving to the students. And this extrinsic motivation is required in the authoritative form of teaching. So this type of teaching, the memory level of teaching का जो concept है वो किसने दिया था? It was given by Herbert. Remember, memory level of teaching का concept Herbert ने दिया था. And you have to remember that the term pedagogy is also associated to this form of teaching only. Pedagogy का मतलब होता है art of teaching. यहाँ पर हमारा major focus किस पे होता है? Rote learning, to remember the facts. And hence we focus on repetition, review and recall. यहाँ पर हम oral test लेते हैं, written test लेते हैं, recall करते हैं, क्योंकि हमारा major purpose ही यही होता है कि we have that fact base created, because it is on those facts that further on we are going to construct the entire building. I hope we are clear with authoritative form of teaching. Right, next we move forward and talk about the interactive level. Right, that's level 2. Interactive level मतलब यहाँ पे बच्चे बड़े हो जाते हैं and the teacher is not just a lecture giver, she is not just the provider of facts. Right, यहाँ पे जो टीचिंग स्टाइल होता है वो बदल जाता है. यहाँ पे द स्टूडेंट एंड द टीचर आर इक्वल पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग. The students are allowed to speak up, raise their doubts, ask questions, discuss, contradict. यहाँ पे डेमोक्रेसी इन्वॉल्व हो जाती है in the teaching process. And hence we call this level as the understanding level. जो पहला था उसको हम बोलते हैं memory level, तो इसको हम बोलते हैं understanding level. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ rote learning नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ fact based create नहीं कर रहे, यहाँ पे we are trying to correlate those facts, और correlation के through we are trying to develop something new, we are trying to learn something new. And hence there is a correlation between different subjects, different topics. और यहाँ पे हम एक interdisciplinary approach को apply करते हैं. We have questions, debates, discussions, clash of opinion. All of this is very, very common here. This concept is something that was given by Morrison. Understanding level Morrison ने दिया है. जो initial memory level था वो Herbert ने दिया था. Remember the names, they are asked in the examination. यहाँ पे teacher और student का, teacher और learner का दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है. द टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स टू प्रोवाइड नॉलेज, इंफॉर्मेशन, whereas a teacher learner actively participates to grasp that knowledge, to correlate that knowledge with different topics, with different subjects. और इस फॉर्म ऑफ टीचिंग को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फॉर्म ऑफ टीचिंग को जहां पे बच्चे बड़े हो जाते हैं, दे बिगिन टू अंडरस्टैंड, दे बिगिन टू कोरिलेट, दे बिगिन टू डिस्कस. वी ऑल्सो कॉल दिस एज एंड्रागॉजी, दैट इज एडल्ट लर्निंग. और ये जो कॉन्सेप्ट था, दिस वाज गिवन बाय मैल्कम नॉल्स. मैल्कम नॉल्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया था. रिमेंबर, इस ऐसी फॉर्म ऑफ टीचिंग को हम एंड्रागॉजी भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट एज एडल्ट लर्निंग. और ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है. व्हाई डू वी कॉल इट सेल्फ डायरेक्टेड? बिकॉज इट इज द स्टूडेंट हु डिसाइड व्हाट टू डू फर्स्ट, व्हाट टू डू आफ्टर. तो इट इज सेल्फ डायरेक्टेड. ओके, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, दैट इज एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन. जब हम बोलते हैं और ये दोनों कॉन्सेप्ट प्याजे ने दिए थे. तो अब टर्म को लेमैन टर्म्स में समझो. जब हम बोलते हैं एकोमोडेशन, इसका मतलब खुद है कि तुम्हें कहीं जाकर एडजस्ट करना है, बट फॉर दैट एडजस्टमेंट यू हैव टू चेंज समथिंग इन योरसेल्फ, राइट. और जब हम बोलते हैं एसिमिलेशन, तो इसका मतलब है कि चीजें हैं, एक नई चीज आएगी और वो जुड़ जाएगी. ओके, लाइक लेट्स गिव यू एग्जांपल ऑफ एसिमिलेशन. You have lot of clothes and you buy few more. So those few more clothes add down to your closet. So that is the example of assimilation. There are similar things, you buy something similar and वो
एड ऑन हो गए, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। पर जब हम बोलते हैं एकोमोडेशन, व्हेन अ गर्ल गेट्स मैरिड, उसे क्या बोला जाता है? गो एकोमोडेट योरसेल्फ, adjust yourself. So any process of accommodation requires a change. तो assimilation तो होता है, सेम सेम चीजें हैं, एक नई चीज आएगी, जुड़ जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट जब हम बोलते हैं accommodate, that means you have to change something. A change is involved in the process of accommodation. Okay, so I hope now we are clear with the interactive teaching, right, or the understanding level of teaching. So the final and the third level of teaching, which is the highest level of teaching, is laissez-faire style. What is a laissez-faire style? यहाँ पे स्टूडेंट मेजर प्लेयर होता है। यहाँ पे स्टूडेंट जो होता है वो अपनी बेसिक डिग्री कंप्लीट कर रहा होता है। ये बेसिकली इज फॉर द पीएचडी स्टूडेंट्स। इस फॉर्म ऑफ टीचिंग मेजरली पीएचडी स्टूडेंट्स को टारगेटेड होती है। इसको हम एनालिसिस लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का बेस, अंडरस्टैंडिंग, कोरिलेशन सब बन चुका है। यहाँ पे इनसाइट डेवलपमेंट होता है। इस फॉर्म ऑफ टीचिंग में जो स्टूडेंट होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होता है। ये जो होती है मेजर एग्जाम्पल है पीएचडी स्टूडेंट्स। वो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, डेटा निकालते हैं, उस चीज को प्रूव करते हैं और किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। We also call this as a reflective level of teaching. और ये जो concept है reflective level of teaching, this was given by Hunt. ये self determined होती है। Why do we call it self determined? We also call it heutagogy. जैसे पहले को हम बोलते हैं pedagogy, सेकंड को andragogy और थर्ड को heutagogy. heutagogy बोलते हैं और ये सेल्फ डिटरमाइंड होते हैं, खुद डिसाइड करता है जो पीएचडी स्टूडेंट होता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड होती है। व्हाई सो मच अनस्ट्रक्चर्ड? क्योंकि वो कर करके ही प्रॉब्लम तक पहुंचता है। देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। ही रियलाइजेस, फर्स्ट ही डज समथिंग, देन ही रियलाइजेस कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, देन ही गोज बैक एंड डू समथिंग एल्स, एंड बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग समथिंग न्यू। तो ये स्ट्रक्चर्ड कैसे हो सकती है? वंस यू हैव फाउंड समथिंग न्यू देन यू कैन स्ट्रक्चर इट आउट। सो ये जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल, दिस इज वेरी मच अनस्ट्रक्चर्ड। और इसमें फुल मोटिवेशन इंट्रिंसिक होती है। कोई भी बाहर से आपको मोटिवेशन देने नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव रीच दैट लेवल। यहाँ पे टीचर सिर्फ तुम्हारा कैटलिस्ट होता है और उसका बहुत ही पैसिव रोल होता है। So I hope now we are clear with the three levels of teaching, that is authoritative, interactive and laissez-faire, right? So अब टीचिंग जो होती है वो इन फॉलोइंग डोमेन्स में होती है, जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन। जब हम बोलते हैं टीचिंग एट द कॉग्निटिव डोमेन, इसका मतलब टीचिंग जहां पे दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है। कॉग्निटिव का मतलब होता है इन्वॉल्विंग योर माइंड। दूसरा जो डोमेन होता है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव डोमेन। जब हम बोलते हैं टीचिंग एट इफेक्टिव डोमेन, दैट मीन्स इट इज इन्वॉल्विंग योर इमोशंस। एंड थर्ड इज साइकोमोटर डोमेन, दैट इज टीचिंग दैट इन्वॉल्व्स योर फिजिकल स्किल्स। तो तीन लेवल पे टीचिंग होती है, कॉग्निटिव डोमेन पे, अफेक्टिव डोमेन पे और साइकोमोटर डोमेन पे। कॉग्निटिव डोमेन इज समथिंग दैट इन्वॉल्व्स योर माइंड, affective domain is something that involves your emotions, psychomotor domain is something that involves your physical skills, your hand movements. So these are the three major domains of teaching. Okay, अब जो learning होती है उसका major aim होता है behavior change, right? अब दो terms होती है, एक होता है behavior, एक होता है belief. तो जब हम बोलते हैं बिहेवियर, तो बिहेवियर के साथ और दो टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग। अब कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग का मतलब होता है मेजरली ये तुम्हारी साइकोमोटर डोमेन्स को इन्वॉल्व करती है। कंडीशनिंग मेजरली मेमोरी लेवल होता है जो कंडीशनिंग में प्ले करता है। अब कंडीशनिंग का क्या मतलब है? मतलब एक स्टिमुलस तुम्हें दिया जाता है, तुम उसको रिस्पॉन्ड करते हो और वो रेपिटेटिवली ये काम किया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है ताकि यू गेट इनटू दैट बिहेवियर। अब कंडीशनिंग दो टाइप की होती है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग, एक ओपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पावलोव ने दिया है और ओपरेंट कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बीएफ स्किनर ने दिया है। तो कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग होती है जैसे कोई भी डॉग है,
ही इज टॉट कि जब विसल बजेगी तभी तुम्हें खाना खाने आया है, अदरवाइज खाना रखा हुआ है, यू डोंट हैव टू कम फॉरवर्ड। कॉन्स्टेंटली उसको ये बात सिखाई जाती है, कॉन्स्टेंटली उसको स्टिम्युलस को रिस्पॉन्ड करना सिखाया जाता है बाय रेपिटेटिव एक्शन। एंड ऑल्सो अगर वो आगे सामने आता है बिफोर द विसल तो उसको पनिश किया जाता है, ही इज बीटन अप, तो ही रियलाइजेस द फैक्ट। तो वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके थ्रू he realizes that he has to come forward to take the food only and only when the whistle is blown. So that gets a part of his involuntary behavior gradually. तो क्लासिकल कंडीशनिंग ऐसी कंडीशनिंग होती है जहां तुम इनवॉलेंटरली उसको अपना एक बिहेवियर का पार्ट बना लेते हो, और ओपरेंट कंडीशनिंग एक वॉलेंट्री एक्शन होता है, राइट? बट दिस ऑल्सो इज थ्रू स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स ओनली, राइट? और ये एक बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ टीचिंग होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक लेवल्स ऑफ टीचिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स योर मेमोरी, राइट? यहाँ पे मेमोरी के साथ खेला जाता है। ट्रेनिंग वी हैव ऑलरेडी talked about, right? That this is majorly dealing with one skill, right? And this is majorly dealing with physical environment and also with the practical application of that thing, right? उसके बाद में टर्म आती है बिलीफ। जब हम बोलते हैं बिलीफ तो ये एक हाई डोमेन टर्म है, और बिलीफ में दो चीजें इन्वॉल्व होते हैं, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन। जब हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन तो ये तुम्हारा कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व होता है, इसमें मतलब दिमाग इन्वॉल्व होता है। टीचर तुम्हें इंस्ट्रक्ट करती है, बताती है ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। पेरेंट्स तुम्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं, बाहर के एनवायरमेंट के थ्रू इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। तो ये तुम्हारा कॉग्निटिव डोमेन होता है जो इन्वॉल्व होता है, तुम्हारा दिमाग इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, राइट? और इट इज अ मच हायर लेवल ऑफ टीचिंग टू कंडीशनिंग, राइट? पर जो हाईएस्ट लेवल होता है दैट इज इंडोक्ट्रिनेशन, और इंडोक्ट्रिनेशन तुम्हारा इमोशन इन्वॉल्व करता है। इंडोक्ट्रिनेशन मेजरली कहाँ पे प्ले होता है? रिलीजन में। ये जो कम्युनल राइट्स होते हैं, ये जितने भी ये सब चीजें होती हैं, ये इंडोक्ट्रिनेशन की वजह से ही होते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन इज अ काइंड ऑफ माइंड वॉश, राइट? जहां पे तुम्हारी सोचने समझने की सारी शक्ति चली जाती है। यू बिलीव इन अ इंडिविजुअल सो मच that you do not have any doubts upon him and you do not raise any question, you do not criticize that individual, right? You become completely dumb, you do not involve your rational mind here. What is involved? Your emotions, और तुम emotions में बह जाते हो। it is a kind of a brain wash, और ये highest level of teaching involved होते हैं। this is a reflective level of teaching। ये जितने भी हमारे रिलीजियस राइट्स होते हैं और जितने पॉलिटिक्स होते हैं, बहुत सारी जगह पे इंडोक्ट्रिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, राइट? ओके, सो उसके बाद में अब टीचिंग कैसे करनी चाहिए, इसके बहुत सारे मैक्सिम्स हैं, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। टीचिंग जो है वो हमेशा सिंपल से शुरू करके और कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़नी चाहिए। दैट मीन्स टीचिंग जो है पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाओ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए कुछ बड़ा समझाओ ताकि चीजों को रिलेट किया जा सके, राइट? पहले उस चीज से शुरू करो जो तुम्हें आता है, राइट? बिगिन फ्रॉम समथिंग नोन एंड ग्रेजुअली मूव ऑन टू समथिंग अननोन, राइट? नोन से शुरू करके अननोन की तरफ आगे बढ़ो। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। बिगिन फ्रॉम समथिंग दैट द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सीन, राइट? ताकि दे कैन रिलेट दैट टू देयर माइंड। एक छोटे बच्चे ने अगर कुछ देखा है, राइट, कुछ फिजिकल है दैट ही कैन टच एंड फील, दैट विल बी इजियर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड, एंड देन वी ग्रेजुअली मूव ऑन टू अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, राइट? तो वही वाला है, सीन टू अनसीन या फिर कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। पहले हम फिजिकल ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो हम 5 सेंसेस के थ्रू देख सकते हैं, बिकॉज दे आर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड कोरिलेट। And gradually on we talk about abstract concepts, we talk about concepts जिसका mental image बनाना पड़ता है, but they can only be understood when first the concrete and the physical things are understood, right? So हमें हमेशा simple चीजों से complex की तरफ, known से unknown की तरफ, seen से unseen की तरफ और concrete से abstract की तरफ move करना चाहिए any teacher। Then
particular to general. That means first we need to talk about something that is particular. एक proper concept के बारे में बात करना चाहिए. Gradually move on करते करते हमें उसे generalize करना चाहिए. मतलब inductive approach हमें जानी चाहिए. पहले you should talk about that a concept that is very very particular, pointing towards an individual. फिर हम बोलेंगे this is also like this, this is also like this, this is also like this, and hence all such things are like this. तो particular से general की तरफ move करना चाहिए. Any form of teaching should be a bottoms up approach. Okay, then इट शुड बी होल टू पार्ट्स. मतलब पहले एक पूरी चीज को देखना चाहिए, पहले एक पूरी साइकिल को देखना चाहिए, फिर धीरे धीरे उसके एक एक पार्ट्स को समझना चाहिए. होल टू पार्ट्स एक कॉन्सेप्ट है जो जेस्टाल्ट ने दिया. इट्स कॉल्ड जेस्टाल्ट साइकोलॉजी. इसका मतलब पहले हम उस पूरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसके बाद में धीरे 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 उसके एक एक पार्ट के साथ डील करते हैं. राइट. देन वी शुड डील फ्रॉम इनडेफिनाइट टू डेफिनाइट, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल. पहले हमें वो चीजों के साथ डील करना चाहिए जो साइकोलॉजिकल हैं, विच आर इन माइंड, एंड ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स लॉजिकल थिंग्स. वी शुड डील फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस. एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि कोई एक बड़ी चीज है, उसको टुकड़ों में बांट दिया, दैट इज एनालिसिस. राइट. तो एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ मूव करना चाहिए. मतलब एक बड़ी चीज जो है उसको पहले टुकड़ों में बांट के देखो, दैट इज analysis. Analysis is any concept you break down that into different parts and try to understand each part. That is analysis. पर जब हम बोलते हैं synthesis, synthesis का क्या मतलब होता है कि उन सारे जो तुमने पार्ट्स को समझा है उनको as a whole देखना is synthesis, right? Then Dalton is somebody who has provided you with the concept of self-study. Remember that. And it is Monastery and Froebel who has provided you with the concept of training of senses. These two are important. Dalton ने तुम्हें self study का concept दिया है और Montessori और Froebel ने तुम्हें training of senses का concept दिया है. Right? Then we talk about adult learning. Okay, so we wrap up the session here. We will be dealing about teaching in the next class, and next class we will wrap up the entire teaching aptitude for you, right? If you like the session, please hit the like button, subscribe to my channel for more such videos. Study hard.